So what are the different uses of penicillins? Penicillins, penicillins, they are used in the different kind of infections. So mostly they are active against pseudomonal pneumonia. So pneumonia caused by pseudomonas aeruginosa. Then pneumococcal emphysema, also used in the heart infection, pericarditis, infection of pericardium of your heart. Pneumococcal meningitis. So pneumococcal meningitis means if there is infection of pneumococcus in the layers of your brain, that is pneumococcal meningitis. Scarlet fever is also there, also used in the rheumatic fever, and penicillins, they are also used in the pharyngitis. Nowadays synthetic derivative of penicillins they are used. They are also active in the streptococcus osteomyelitis. Streptococcus caused by osteomyelitis caused by streptococcus. Osteomyelitis means inflammation of your bones. Inflammation of bones, they are caused by streptococcal or streptococci. They are treated by penicillins. Also used in the infectious arthritis, streptococcal subacute bacterial endocarditis. Endocarditis मतलब endocardium का infection. Cephalosporin infection. Okay. Meningococcal meningitis. Very important use of penicillins, STD, sexually transmitted disease. So it is a drug of choice. Penicillin is a drug of choice in case of treatment of gonorrhea and syphilis. In case of gonorrhea, syphilis, so penicillin G particularly, they are the drug of choice. Drug of choice for cardiovascular syphilis, neurosyphilis. So also used in the anthrax, diphtheria and gas gangrene. तीनों anthrax में, diphtheria में, gas gangrene में. Penicillin G जो है, it is a drug of choice in case of rare infection like anthrax, actinomycosis. Actinomycosis की वजह से जो anthrax होता है, इसमें भी drug of choice है. Also a drug of choice in trench mouth rat bite fever. Right? Trench mouth rat bite fever. Those also okay, and those infections caused by Listeria monocytogenes. Also used against the actinomycetes. They are the drug of choice against the actinomycosis. तो ये फंगस है actinomycetes, उसका इन्फेक्शन हो गया है, तो actinomycosis. For prevention, prophylactically, penicillins are used in the rheumatic fever, streptococcal infection, bacterial endocarditis, gonorrhea, syphilis, etc., etc. Recurrent lymphangitis, lymph infection. So these are the uses of penicillins, and we'll see the remaining drugs from penicillin. So next is the other penicillin. Other penicillin. Okay? So first, beta lactamase resistant penicillin. Question आता है आपको, one of the following drug is a beta lactamase resistance. So methicillin is a beta lactamase resistance. Methicillin is having beta lactamase resistance, and 70% of community acquired staphylococcus aureus जो infection होता है, 70% of community acquired S. aureus, which S. aureus, this bacteria will give coagulase test positive. तो ये hemolytic bacteria होता है, it will give coagulase test positive staphylococcus. They are sensitive for the penicillin. So बाकी penicillin में अगर sensitive नहीं है, so if penicillin G, if S. aureus is a resistant to penicillin G, but methicillin sensitive. 70% of coagulase negative bacteria they are resistant to methicillin. 70% जो स्टेफिलोकोकस कोका है, जो coagulase test positive थे, वो sensitive होते. So 70% of staphylococcus which are negative coagulase test, which are having negative coagulase test, so they are known as a methicillin resistant staphylococcus aureus. Term is nothing but the methicillin resistant staphylococcus aureus. So MSRA. MSRA. So methicillin resistance staphylococcus aureus. This term is very important, and they used to ask question. Drug of choice in MSRA. Drug of choice in MSRA. What is the drug? We have already seen. If you don't know, they call vancomycin. Vancomycin is a drug of choice. Vancomycin is a drug of choice in case of methicillin resistant staphylococcus aureus infection. It is used to refer the beta lactam. Okay, the term MSRA, methicillin resistance staphylococcus aureus, is the term which is used to refer the antibiotic resistance for the staphylococcus. That is penicillinase producing staphylococci. Most of the methicillin resistant staphylococcus aureus resistant strain are resistant to the all beta lactam antibiotic. जो MSRA strain होता है, MSRA
मतलब मिथिसिलिन रेजिस्टेंस है ना, मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरिस, जो अगर मिथिसिलिन को भी रेजिस्टेंट है तो उसका मतलब ये होता है कि इफ द स्टेफिलोकोकस ऑरिस इज रेजिस्टेंट टू द मिथिसिलिन, दैट मींस इट इज रेजिस्टेंट टू द ऑल पेनिसिलिन्स एंड सेफलोस्पोरिन्स. जो स्टेफिलोकोकस ऑरिस है particularly those which are showing negative coagulase test, they are resistant to the methicillin. That means they are also resistant to the penicillins and cephalosporins. So clofazimine, diclofazimine, fluclofazimine, they are the other similar drugs like methicillin. Clofazimine जो होता है, diclofazimine, fluclofazimine, they are similar to methicillin, but they are less bound to plasma proteins. इनमें सारे methicillin resistant staphylococcus aureus which is not susceptible for the beta lactam activity, right? उसमें ये भी यूज करेंगे clofazimine, diclofazimine, है ना, fluclofazimine, they are like a methicillin. That's why penicillins which are active against the gram positive and gram negative bacteria means they are the broad spectrum penicillins, right? So example is ampicillin. सबसे पहला है ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में. ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्यों बोला इसको, ये ग्राम पॉजिटिव प्लस ग्राम नेगेटिव के ऊपर. एम्प्लिसिलिन, इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग एंड द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस एम्प्लिसिलिन इज नथिंग बट द डायरिया. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. डायरिया इज द एडवर्स इफेक्ट व्हिच इज कॉमनली, एम्प्लिसिलिन इज गिवनली ओरली. अगर एम्प्लिसिलिन ओरली यूज करते हैं आप तो डायरिया आपको हो जाएगा. So it can cause skin rash. Solubility of the solution is also a problem. Ampicillin का solution stable नहीं होता है, and ampicillin, the broad spectrum penicillin, can cause diarrhea, can cause skin rash. Now it is used in the, इसका use क्या है ampicillin का? It is used in the treatment of UTI and RTI. UTI, RTI, meningitis, septicemia, gonorrhea, and bacterial endocarditis. UTI मतलब urinary tract infection, RTI मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस मालूम है आपको, सेप्टिस्मिया मतलब वहाँ पे अगर सेप्सिस अगर हो गया, पल्स अगर हो गया, सेप्टिस्मिया. बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस है ना, एंडोकार्डियम का इन्फेक्शन. कोलेसिस्टाइटिस मतलब क्या, इन्फेक्शन ऑफ योर गॉल ब्लैडर, इन्फेक्शन ऑफ योर गॉल ब्लैडर मतलब कोलेसिस्टाइटिस, एंड आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बाइलियरी ट्रैक्ट एंड इंटेस्टिनल. Also used in the typhoid fever. It is a preferred drug over the tetracyclines in case of pregnant women because penicillins they are a safe drug. Penicillin क्या होता है, safe होता है. Tetracycline जो होता है they are teratogenic in nature. That's why this ampicillin is safe drug in the pregnant woman. Now ampicillin is a drug of choice in case of listeria meningitis. Listeria जो meningitis है listeria bacteria से हो रही है, so उसमें ये drug of choice. It is a drug of choice in the listeria meningitis. Amoxicillin another drug है ना, आपने देखा है ampicillin, उसका ही दूसरा एक डेरिवेटिव है उसका जैसा. Amoxicillin is a similar drug to the ampicillin in all other aspects but as a lower incidence of diarrhea. बस ये डायरिया कम करता है. वैसे डायरिया बहुत सारे लोगों को होता है, हाँ रीजन अलग अलग होते हैं. ampicillin की वजह से जो डायरिया होता है because of the super infection. So amoxicillin is another drug similar to ampicillin, but it is a well tolerated. That means it have less diarrhea. Then telampicillin become penicillin, p-vampicillin. Telampicillin become penicillin, p-vampicillin. All these are the prodrugs of your ampicillin. ये क्या है सब prodrugs of ampicillin? मतलब क्या कि telampicillin after metabolism in the body you will get ampicillin. Ampicillin का मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या मिलेगा, एम्प्लिसिलिन. p-vampicillin का मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या मिलेगा, एम्प्लिसिलिन. So all telampicillin, p-vampicillin, p-vampicillin, they are nothing but the prodrugs of your ampicillin. Amoxicillin has certain advantages over the ampicillin, but it is expensive. तो amoxicillin जो होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि देखो ampicillin and cloxacillin मोस्टली ये दोनों कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं. ampicillin and क्लोक्सासिलिन. एम्प्लिसिलिन जो होता है उसके साथ में और एक ड्रग दिया जाता है कॉम्बिनेशन में, एम्प्लिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन है ना, बहुत सारे उसका कॉम्बिनेशन है. मॉक्स है ना, उसका एक एग्जांपल है मेगापेन. मेगापेन नाम का एक
ब्रांड है उसका, दैट इज यूज्ड, वेरी फेमस ब्रांड वाज मेगा पेन। उसके बाद में एम्पलीसिलिन को रिप्लेस किया एमोक्सिलिन ने, एम्पलीसिलिन हैज रिप्लेस्ड बाय एमोक्सिलिन, amoxicillin clavulanic acid, amoxicillin clavulanic, that combination is now famous. So tilampicillin, becampicillin, pevampicillin, they are the product of ampicillin. Amoxicillin is a little bit expensive. Adverse drug reaction of these drugs are the diarrhea and rashes. Now next we'll see extended spectrum penicillins. थोड़ा सा स्पेक्ट्रम बढ़ गया, मतलब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव तो है, इसके अगेंस्ट में थोड़ा सा एंटी फंगल एक्टिविटी भी ऐड हो जाए। So because of they inhibit the wide variety of aerobic gram-negative bacilli, including Pseudomonas aeruginosa. That's why they are known as the extended spectrum penicillins. क्यों? उनका स्पेक्ट्रम एक्सटेंड हो गया। पहले तो क्या है, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ही पेनिसिलिन एक्टिव था, थोड़ा सा मॉडिफाई करके ग्राम नेगेटिव में भी चला गया, Pseudomonas aeruginosa भी ऐड हो गया। So extended spectrum penicillins. So they act synergistically with aminoglycosides, against the Pseudomonas aeruginosa and Enterobacter. Pseudomonas aeruginosa Enterobacter में along with the aminoglycosides they are used synergistically. They are the less reactive, okay, less reactive than penicillin, okay, penicillin G for gram positive. मतलब ये extended spectrum penicillin जो है वो ये इनका extended action है against the gram negative and Pseudomonas. But penicillin G is only active against the gram positive. But when you use this extended spectrum penicillin in the gram positive, they will show you less secret, the less active than penicillin G for gram positive. Not reliable in the treatment of Staphylococcus infection. CNS में कितना जाता है? CNS penetration is less, therefore not used in the treatment of meningeal infection. They are physicochemical, okay, they are the physicochemically incompatible with the aminoglycoside mixed together in the bottle. मतलब क्या, जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन होंगे वो अमाइनो ग्लाइकोसाइड के साथ में एडमिक्सचर नहीं दे सकते ना। देखो नर्स क्या करते हैं, सलाइन लगाते हैं, उसमें 2-4 इंजेक्शन डालते हैं, उसको मालूम होना चाहिए कि इनकम्पेटेबिलिटी क्या होता है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स एंड एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन दे आर इनकम्पेटेबल एंड यू कैन नॉट यूज एडमिक्सचर। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है इसके, इन अ हाई डोज दे कैन कॉज bleeding and interferes with the platelet function. Bleeding कर सकते हैं, they interfere with the normal platelet function. Example क्या है इसके, इसमें extended spectrum में piperacillin. Piperacillin is a anti-pseudomonal penicillin. It is a 8 times more active than carbapenicillin. Carbapenicillin, ticarcillin, piperacillin, mesoxylin, azoxylin. We have already seen the examples in the extended spectrum penicillin. So mainly they are used for neutropenic immunocompromised patient having serious gram negative infection and burns. ये सब extended spectrum penicillin जो है इसमें यूज करेंगे ये neutropenic immunocompromised patient having serious gram negative infection, जिसमें gram negative infection है and burns, इसमें ये यूज करेंगे, ये important है। Now next is the clavulanic acid. Clavulanic acid. What is clavulanic acid? It is combined with the penicillins. इससे होता है amoxicillin plus clavulanic acid इनका कॉम्बिनेशन आता है, जैसे आपका टैबलेट आता है देखो क्लेवम 625, क्लेवम आता है, क्लेवम बहुत फेमस है अल्केन का, क्लेवम 625. Why it is combined? This is the clavulanic acid is a product which is produced by Streptomyces clavuligerus. Okay, clavuligerus. So product from Streptomyces clavuligerus. The substance itself has a less antibiotic activity. इसको भी antibiotic activity है, but लेकिन क्या है, कम है. This substance is actually having antibiotic activity which is less, but this is a powerful irreversible inhibitor of what? Beta lactamase. It is a potent and irreversible inhibitor of beta lactamase, which protect the beta lactam gene or which protect the beta lactam antibiotics from inactivation. Therefore, it is combined with the beta lactam antibiotics. मतलब ये क्लेवुलिनिक एसिड जो है ना, ये एंटीबायोटिक बोल के नहीं है, so it is a synergistic, इसका additive है. So when amoxicillin, ampicillin, these drugs they are combined with the clavulanic acid. So why? Because
ये जो पेनिसिलिन है they are destroyed by beta lactamase producing bacteria, that's why they become ineffective, उनको रेजिस्टेंस होता है, right? So to prevent that, one more chemical is there known as clavulanic acid, which is isolated from Streptomyces clavuligerus. So it is a weak antibiotic, but it is a powerful and potent irreversible inhibitor of beta lactamase. That's why it is combined with the penicillins, and you will find its place in the therapeutics. Right? Now it is used in combination with amoxicillin. It increases the bacterial spectrum of amoxicillin to the beta lactamase, producing bacteria like Staphylococcus aureus, E. coli, Haemophilus influenza. So what these bacteria produces the beta lactamase enzyme. That's why for the treatment of this infection, amoxicillin and clavulanic acid they are combined together. Now another new molecule is there from clavulanic acid only, sulbactam. उसके बाद में tazobactam भी आ चुका है. Sulbactam is another beta lactamase inhibitor, similar in action to the clavulanic acid. Then another one is a tazobactam. Tazobactam is a penicillinic acid sulfate, which is also beta lactamase inhibitor, which is also combined with the piperacillin. तो ये तो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, पिपरेसिलिन प्लस टैजोबैक्टम, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आजकल फेमस है, बहुत सारे डॉक्टर यूज करते हैं. पिपरेसिलिन प्लस टैजोबैक्टम, नाम है पेप्टाज, बहुत सारे ब्रांड है. सो nowadays it is a combination. Am I audible to you? Am I audible to you? Yes sir. Now next part is the cephalosporin. So penicillin जैसे होता है वैसे ही cephalosporin. So in the penicillin you have beta lactam ring. In the penicillin you have beta lactam ring. So similarly in the cephalosporin also you have beta lactam ring. But the difference is only penicillin was the derivative of 6 amino penicillinic acid, and here cephalosporins are the derivative of 7 amino cephalosporinic acid. That's it. So they are classified into different different types according to their generation. Important है इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर. So cephalosporins they are classified into according to the generation. Now cephalosporins are also isolated from bacterial source, only from fungus. So first we'll see it. First generation cephalosporin, आपको इसको याद रखना है. First generation cephalosporin, इसमें आता है orally used first generation cephalosporin. उसमें आता है cephalaxin and cephatoxyl. Cephalaxin, cephatoxyl ये पुराने वाले ड्रग है दोनों, orally यूज किए जाते हैं. Parenterally फर्स्ट जनरेशन में आता है cephazolin. So parenterally फर्स्ट जनरेशन में आता है cephazolin. Now second generation cephalosporins, orally used second generation cephalosporin. इसमें आता है cephaclor, cefuroximine axidyl, cefuroximine axidyl, इसका ब्रांड नेम आता है cefuरो, बहुत सारे आता है. इसका तो बहुत फेमस है ceprozil. All these are the second generation orally used. Parenteral में आता है cefuroximine, then cefoxime, then cefoxitin, cefuroxime and cefoxitin. Third generation cephalosporin, इसमें आता है orally and parentally. So orally used third generation. इसमें आता है cefixime, एक GP नाम का टैबलेट आता है, GP200 नाम का टैबलेट आता है. GP200 ग्लेनमार्क का टैबलेट आता है. Then that you have cefixime. मोनोसेप बोल के टैबलेट आता है, मोनोसेप ओ बोल के टैबलेट आता है. cefixime, cefodoxime, then cefdinir, है ना. ये जो लोग हैं सब क्या है, थर्ड जनरेशन ओरली यूज्ड cephalosporin. cefixime, cefodoxime, है ना, cefdinir, cefodoxime proxyl salt है उसका, cefibutane and ceftamate pioxyl. All these are the salt, pioxyl and proxetyl, axetyl, सब salt है. cefixime, cefodoxime, यहाँ पे जिम याद रखो, जिम टिल नीर 10, जिमटिल नीर 10 याद रखना है आपको. ओरली यूज्ड थर्ड जनरेशन cephalosporin, पेरेंटली यूज्ड cephalosporin ऑफ थर्ड जनरेशन. तो इसमें cefotaxime, है ना, cefotaxime, इसका इंजेक्शन आता है टैक्सिम नाम का इंजेक्शन, टैक्सिम, इसमें cefotaxime आता है. सेफ्ट्रैक्सोन, बहुत सारे आता है, जोन, सेप्टास इंजेक्शन, सेफ्ट्रैक्सोन,
Sep and septizone, okay, septic zone, septizozine, then septazidine, then cephalosporin, cephalosporin. So these are the parentally used third generation cephalosporin. फोर्थ जनरेशन में क्या आएगा? फोर्थ जनरेशन में आता है सेफीपाइम, सेफीप्रोम, जीपैट 2023 23 में ये क्वेश्चन था. सेफीप्रोम बिलोंग्स टू फॉलोइंग जनरेशन ऑफ सेफलोस्पोरिन. ये जीपैट 23 में क्वेश्चन था. इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर. So that's why generations of cephalosporins are important. We are going to see once again to do it. So as I told you, these cephalosporins, they are nothing but they are the derivative of 7 amino cephalosporinic acid. So 7 amino cephalosporinic acid. 7 के and this one is cephalosporin ring. So in the also it is known as Cepham ring. जैसे penicillin में क्या है? Penum ring होता है. This one is known as a Cepham ring. So cephalosporins, they are nothing but they are the derivative of 7 amino cephalosporinic acid. So like cephomycin are also similar to cephalosporin, but they are not derived from actinomycetes. ये cephalosporin कहाँ से आता है? Actinomycetes. So first time isolated from fungus Cephalosporium and Acremonium. Cephalosporium acremonium. Cephalosporium acremonium. This was the fungus from which cephalosporin was isolated. और mechanism of action क्या है? They act in exactly same way as the of the penicillin. So they act by similar way in a penicillin, inhibiting the cell wall synthesis in the manner similar to penicillin, and they are the bactericide. Resistance to the cephalosporin develops slowly, and that is also mediated by bacterial beta-lactamase or lack of bacterial permeability to the drugs. Cross resistance to the beta-lactam antibiotics also seen. तो antibacterial activity का spectrum क्या आएगा? Antibacterial activity. They are active against the variety of gram-positive gram-negative bacteria. They are effective against Pseudomonas and Clostridium diphtheria. Group A. Then beta-hemolytic streptococci, active against the staphylococci. No cephalosporin is available at present, which is active against the Streptococcus faecalis. ये जो बैक्टीरिया है Streptococcus faecalis, इसके अगेंस्ट में there is no cephalosporin which is available. For gram-negative organism, they are susceptible for these antibiotics. Includes E. coli, Neisseria gonorrhoeae, Salmonella typhi, Shigella. ये भी इसके sensitive है. So E. coli are sensitive to cephalosporin. Neisseria gonorrhoeae are sensitive. Then Salmonella typhi and Shigella. These are the spectrum of antibacterial activity of cephalosporins. Next up है absorption, distribution, metabolism, elimination. तो ये भी drug they are also absorbed like a penicillin. They are given in the oral route. They are given by intramuscular injection. But intravenous injection they are little bit painful. They are mostly eliminated by renal tubular secretion. इनका active secretion होता है. Now propenicillin जो है ना, it is a uricosuric drug which will increase the plasma levels of penicillins as well as cefotaxime is partly metabolized in the liver before excretion. Most of these drugs are excreted unchanged. Adverse reaction क्या है? Locally they can cause thrombophlebitis at the site of injection. Intravenous injection अगर देंगे, intravenous injection they can cause thrombophlebitis. They are allergic in nature, skin rash, fever, serum sickness, asthma, urticaria. Rarely they can cause anaphylactic shock, anaphylactic reactions, neutropenia, transient splenomegaly. मतलब क्या? ट्रांजिएंट स्प्लीनोमेगाली मतलब आपका स्प्लीन है बड़ा हो जाएगा, साइज उसका बढ़ जाएगा because of the cephalosporins. So these are the important adverse effects. Like allergy, they can cause thrombophlebitis. Super infection is another adverse effect. So super infection can occur with the third generation broad spectrum cephalosporin. Third generation cephalosporin can cause super infection. Nephrotoxicity, important adverse effect. Nephrotoxicity. Nephro मतलब क्या? Nephron. So they have kidney toxicity. With the large doses and can be reversed upon the withdrawal of. मतलब they are the nephrotoxic in nature in a large doses, not in a therapeutic doses. It can also be reversed. Toxicity can be increased. Toxicity of cephalosporins can be increased like diuretic drugs like furosemide or and also increased by aminoglycosides. That's why cephalosporins they are not
given in the combination with the furosemide, or they are not prescribed along with the furosemide or aminoglycosides. Remember, तो इनको aminoglycoside में साइड के साथ में नहीं दिया जा सकता, then furosemide के साथ में भी नहीं दिया जा सकता. Cephalosporins, they can increase the toxicity of cephalosporins can be increased by use of furosemide concurrently or use of aminoglycoside with the cephalosporin. Then next होता है blood toxicity. Blood related toxicity क्या है? So they can cause bleeding, hypoprothrombinemia, prothrombin का level कम करेंगे, and abnormality of platelet aggregation which can be reversed by use of vitamin K therapy. विटामिन के देना है अगर ऐसा कुछ होता है. कॉमन ड्रग्स विद मिथाइल थायो और टेट्राजोल सब्स्टिट्यूशन एट अ पोजीशन, थर्ड पोजीशन है, इसके ऊपर अगर मिथाइल थायो टेट्राजोल ऐसा सब्स्टिट्यूशन है, वो ड्रग जो है जैसे फॉर एग्जांपल सेफोपराजोल, सेफ्ट्राक्सोल, दे आर मोस्टली प्रोन टू द ब्लड टॉक्सिसिटी, वो ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह करेंगे. देन आल्सो दे कैन कॉज डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन. डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन व्हेन टेकन along with the alcohol, particularly new cephalosporins and cephalosporins. मतलब क्या होता है डाइसल्फिराम क्या है? What is disulfiram? It is a drug used in the treatment of alcohol addiction. ये alcohol de-addiction का drug है, disulfiram, right? So it is used in a de-addiction of alcohol. And that's why this disulfiram is also known as anti-abusive. मालूम है तो लिख लो आप. It is also known as anti-abusive. Now when इसमें क्या होता है, बहुत ही अजीब सी किस्सा है. जिसको दारू की लत लगी, those who are addicted to the wine and alcohol, तो उनको क्या करते हैं, those मतलब बेवड़े लोगों के साथ क्या करते हैं, जो बेवड़ा वाला होता है जिसको परेशान हो चुके फैमिली वाले, वो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे वो बेवड़े वाले को, और वहाँ पे डॉक्टर क्या करेगा, आपको डाइसल्फिराम का टैबलेट्स देगा कि इसका खिलाओ. तो कहीं से भी उसको मतलब उसके नोटिस में ना आए ऐसा उसको टैबलेट दे देंगे, मतलब उसको ट्रीटमेंट देने के उसको डाइसल्फिराम दे देंगे. उसके बाद में उसके वो जो वहाँ बैठा है, जहाँ पे बैठा है वहाँ पे बोतल लग देंगे. दे विल प्रेस्क्राइब डाइसल्फिराम. डाइसल्फिराम इज गिवन टू पेशेंट एंड पेशेंट इज अलाउड टू ड्रिंक. पेशेंट इज अलाउड टू टेक अ ड्रिंक. अभी क्या होता है कि डाइसल्फिराम इज नथिंग बट द अल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेज इनहिबिटर. जो अल्कोहल होता है बॉडी में, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होता है, अल्कोहल इज मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी. जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड. फर्स्ट इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड बाय अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, देन एसिटाल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड बाय aldehyde dehydrogenase. Now what disulfiram causes? Disulfiram is a aldehyde dehydrogenase inhibitor. तो अल्कोहल लेगा, ठीक है, पेशेंट को क्या किया, डाइसल्फिराम का टैबलेट दे दिया, मतलब बेवड़ा पिता है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है बीवी को, तो डाइसल्फिराम का टैबलेट देने का और उसको एक बोतल देने का, पी बाबा पी लिया उसने, तो उसका अल्डेहाइड डीहाइड्रोजनेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है, मतलब डाइसल्फिराम की वजह से. नाउ अल्कोहल जो है दैट इज मेटाबोलाइज्ड इनटू aldehyde and then acetic acid, है ना, by alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase respectively, right? As there is a blockage of aldehyde dehydrogenase because of the disulfiram. Disulfiram will inhibit the aldehyde dehydrogenase. Now that's why there is no conversion of aldehyde to the acetic acid, है ना. मतलब क्या, डाइसल्फिराम दे दिया पेशेंट को, उसने ऊपर से दारू पी लिया, तो उसका जो इथेनॉल है that is converted into acetaldehyde by alcohol dehydrogenase. बट एसिटाल्डिहाइड जो है ना, वो कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड में बाय द अल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेज, लेकिन वो एंजाइम तो इनहिबिट हो चुका है यार बिकॉज़ ऑफ द डाइसल्फिराम. तो अभी क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी में अल्डिहाइड जमा हो जाएगा. सो द पेशेंट और द एडिक्ट, अल्कोहल एडिक्ट विल एक्युमुलेट द एसिटाल्डिहाइड इन द बॉडी, एंड एसिटाल्डिहाइड बढ़ गया बॉडी में तो उसको घबराहट होती है, तो घबराहट हो जाएगी, उसका ब्रेन हो जाएगा, उसको नौशिया, उल्टी, इतना बड़ा उल्टी आता है उसको, है ना, डायरिया होता है, यूरिन निकल जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पागल जैसे करने लगता है ना. तो उसको समझ में आता है मेरे साथ ये क्या हो रहा है ना. उसको क्या करते हैं घर वाले, टैबलेट देते, घर वाले मतलब घर पे नहीं करते ट्रीटमेंट, ये हॉस्पिटलाइज करते हैं. हॉस्पिटलाइज नहीं करना है, टैबलेट दे देंगे उसको और नियर बाय उसके जाके ये 90 ml रखते हैं, चल बाबा पे कुछ नहीं होता, पे
वो पी जाएगा, पीने के बाद में उसको जैसे पी लो वैसे उसको घबराहट हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डायरिया हो जाएगा, यूरिन निकल जाएगा उसका, है ना, वोमिटिंग हो जाएगा। तो वो उसको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ द डाइसल्फाइड। तो डाइसल्फाइड क्या है, अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर। विल सी डिटेल इन द अल्कोहल चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा उसको। जो रिएक्शन है डाइसल्फाइड ब्लड रिएक्शन मतलब क्या है, सो पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, है ना, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, डायरिया, वोमिटिंग, these are the disulfiram like reactions. That's why lot of antibiotics they will cause disulfiram like reaction. Am I audible to you? Am I audible to you? So again, next is nothing but the uh, neutropenia, means decrease in the neutrophils, and thrombocytopenia. They are also reported with the ceftazidime. मतलब ये ड्रग न्यूट्रोपिनिया भी करेंगे एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ड्रग फीवर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ड्रग फीवर। So cephalosporin, they are the most common to cause the drug fever, है ना, मतलब एंटीबायोटिक लेने के बाद में क्या होगा, फीवर आ जाएगा। ड्रग फीवर, cephalosporin are the most, cephalosporin are the sporin amongst the they are the mostly common cause of drug fever, cephalosporins याद रखना है आपको। नेक्स्ट विल सी थेरेपेटिक यूजेस ऑफ cephalosporin। इसका यूज क्या है, cephalosporin किसने यूज किया है। So they are used according to their generation. First generation जो है, first generation cephalosporins they are useful against the gram positive and gram negative organism. तो उसमें क्या है, cephalosporin and cipodem. They still have been used in the treatment of community acquired respiratory tract and urinary tract infection and surgical prophylaxis. मतलब जो फर्स्ट जनरेशन cephalosporins है उसमें ग्राम पॉजिटिव वेरिएंट में एक्टिविटी है, ग्राम नेगेटिव वेरिएंट में एक्टिविटी है। So cephalosporin जो है, cipodem जो है, they are still used in the treatment of community acquired respiratory tract infection, urinary tract infection, also used for the surgical prophylaxis. मतलब क्या है, सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस मतलब क्या, मान लीजिए, है ना, आपके घुटने का ऑपरेशन हो चुका है, घुटने में दिक्कत है, नी को ऑपरेट किया है, तो ऑपरेट किया मतलब कि वहाँ पे कट किया, उसको सिला दिया फिर से, राइट। तो वो कट किया, सिला दिया, उसके बाद ऑपरेशन के बाद में जब एक्सपोज होंगे एनवायरनमेंट को, तब इन्फेक्शन ना आ जाए आपके लिए, इसलिए पहले ही एंटीबायोटिक दे दो। सो दैट इज नोन एज सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस। Cephalosporin is a drug of choice in case of surgical prophylaxis. Cephalosporin is a drug of choice in case of surgical prophylaxis. Cephalosporin is a drug of choice in case of surgical prophylaxis. Second generation cephalosporin. Second generation cephalosporin, they have wide coverage than first generation. They are active against the gram positive, gram negative bacilli along with the Haemophilus influenza. Third generation cephalosporin है, third generation cephalosporin, they are more active against the gram negative bacilli than second generation. They are also used in the along with the aminoglycoside for the resistance bacteria. Multi-drug resistant negative bacillary systemic infection. तो along with the aminoglycoside को इसमें यूज करेंगे। Third generation cephalosporin with the aminoglycoside. When they are used in the multi-drug resistance negative bacillary systemic infection. याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है इसका ऊपर। Ceftriaxone. Ceftriaxone is a drug of choice for gonorrhea. Initially, penicillin G was the drug of choice. Nowadays, ceftriaxone, that is a cephalosporin derivative. कितना है? Third generation injectable drug है। कौन सा ये? Third generation is given by injectable. Drug of choice in case of gonorrhea. Drug of choice in case of empirical therapy of meningitis. Ceftriaxone is metabolized to the active metabolite known as a cefotaxime. Desacetyl cefotaxime, ये इसका मेटाबोलाइट होगा। Cefotaxime is metabolized to desacetyl cefotaxime. Cefotaxime का ये मेटाबोलाइट, cefotaxime क्या इंजेक्टिबल है थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन cephalosporin, they are mostly used in the gram negative infection including infection of CNS because they are not more resistant to the they are more resistant to the beta-lactam. ये ग्राम नेगेटिव में ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि इनका रेजिस्टेंस जो बीटा-लैक्टम के ज़्यादा होता है। सेफीप्रोम कैन पेनिट्रेट इनटू एक्सेस टू द सेफ, जो सेफपायरोम है, सेफपायरोम
Cephalosporin is the drug cephalosporin, so that can penetrate into CHF. मतलब अगर आपको meningitis वगैरह है तो cephalosporin drug देंगे, cephalosporin. Then okay, then cefuroxime, cefotaxime, है ना, ceftriaxone. They are the used in the respiratory tract infection, urinary tract infection, RTI, UTI, joint and soft tissue infection caused by gram-negative organisms. They are also used for the surgical prophylaxis, like artificial valve replacement, artificial joint replacement. Also used for the meningitis, gonorrhea, typhoid, ceftriaxone and cefepime. They are mostly mixed infection of the aerobic and anaerobic organism, like जिसमें mixed infection है, aerobic भी है, anaerobic भी है. In cancer patient, then collateral surgery, okay, obstetric complication, मतलब लेडीज में गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक जो है उसमें अगर कोई सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन है तो उसमें भी ये ड्रग यूज करेंगे. एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, दे आर आल्सो यूज्ड इन द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, prophylaxis of neutropenic patient. Then third generation cephalosporins are used with septicemia, aminoglycoside with the cephalosporin they are used, right? So this is the use of aminoglycoside, so this is the use of cephalosporin. इम्पोर्टेंट है उसका यूज, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर. नाउअडेज मोस्टली सेफेलोस्पोरिन्स हैव रिप्लेस्ड द पेनिसिलिन्स. जनरेशंस ऑफ सेफेलोस्पोरिन, एक बार फिर से देखो जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स. जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स, सो पेरेंटल एंड ओरल यूज्ड ड्रग. सो फर्स्ट है आपका फर्स्ट क्लास फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स. उसमें देखो पेरेंटली यूज्ड सेफेलोथिन एंड सेफोसोलिन, एंड ओरली कौन सा है, ओरली है सेफाट्रोक्सिल, सेफलेक्सिन एंड सेफाटेरिन, सेफारेडिन, सेफाट्रोक्सिल है ना, देन सेफलेक्सिन एंड सेफारेडिन. देन सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, so they are more active against the gram negative bacteria, some of the active against the anaerobic bacteria, but no cephalosporin from second generation is active against the Pseudomonas aerogenes. So in that parenterally कौन देता है, cefuroxime and cefuroxime. ठीक है. Then orally used कौन है, cefaclor, cefuroxime, cefuroxime, cefaclor and cefuroxime. Third generation cephalosporin. So they are highly augmented activity against the gram negative. They are having high activity against the gram negative, then enterobacteria, and some of the also active against the Pseudomonas aerogenes as well. They are less active against the gram positive bacteria and coca and anaerobes. So इसमें parenterally कौन देते हैं, cefotaxime, ceftriaxone, ceftriaxone, ceftazidime. These are the parenterally used. Oral कौन है, थर्ड जनरेशन में ओरली यूज थर्ड जनरेशन सेफिक्सिन, सेफोडोक्सिन प्रोक्सिटिल, सेफाडिनिल, देन सेफ्टिब्यूटेन. These are the orally used third generation cephalosporin. Now fourth generation cephalosporin, they are resistant to the beta lactamase, also inhibit the Pseudomonas aerogenes or Staphylococcus aureus. Fourth generation में सिर्फ इंजेक्टेबल ड्रग है. फोर्थ जनरेशन दे आर ओनली इंजेक्टेबल, ओरली अभी तक नहीं आया है. सेफीपाइम एंड सेफीपायरोन, तो जैसे मैं बोला है GPAT 2023. फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, सेफीपाइम एंड सेफीपायरोन, पायरोन याद रखना है. ओके, सो एम आई ऑडिबल टू यू, एम आई ऑडिबल टू यू, आर यू गेटिंग और नॉट, समझ रहे आपको, आर यू गेटिंग और नॉट. सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट अगेन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आता है कार्बापेनम मोनोबैक्टम. ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ बीटा लैक्टम. रिमेंबर पेनिसिलिन्स आर देयर, देन सेफेलोस्पोरिन्स आर देयर, देन कार्बापेनम्स आर देयर, मोनोबैक्टम्स आर देयर. सो इमीपेनम, कार्बापेनम नया कैटेगरी है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में, कार्बापेनम. सो इसमें ड्रग आता है इमीपेनम है ना, इमीपेनम. It is a beta-lactam antibiotic obtained by modification of parent antibiotic thynomycin.
वाइनामाइसिन पेरेंट एंटीबायोटिक है, उसका मॉडिफिकेशन करके इमीपेनम आया है. So it is obtained from Streptomyces cattleya. Streptomyces cattleya. This drug inhibits the bacterial cell wall in the similar way as that of the penicillins, but it is a better tolerated and has a wide spectrum of activity than cephalosporins. It is a highly active against gram-positive and gram-negative bacteria. So it is highly active against the gram-negative bacteria, aerobes, including Pseudomonas aeruginosa, some gram-positive aerobes, and many anaerobic bacteria. It is a beta-lactamase resistant also. It's got beta-lactamase resistance. It is also active against the chlamydia, mycoplasma species. मतलब ये totally broad spectrum है. Broad spectrum. Imipenem is a broad spectrum because it is active against gram-positive, gram-negative, Pseudomonas aeruginosa, also acting against the chlamydia, mycoplasma etc. Mechanism क्या है? As that of the cephalosporins and penicillins, cellular synthesis, absorption, distribution, metabolism, elimination. ADME क्या है? It does not penetrate intracellularly, therefore it is inactive against the intracellular organism. सेल के अंदर नहीं जाता है, सेल के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो यूजलेस. It is hydrolyzed to okay dihydropeptide in the kidney. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. So this imipenem is hydrolyzed in the kidney. Imipenem is hydrolyzed in the kidney. And imipenem is hydrolyzed in the kidney by the enzyme dihydropeptidase or dihydropeptidase. Okay. So this dihydropeptidase enzyme in the kidney that will hydrolyze this imipenem. That's why it is combined with the silastine. That's why it is combined with the silastine. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Why imipenem is combined with the silastine? Because silastine inhibits the dihydropeptidase enzyme in the kidney, and that's why the level of imipenem is increased. So silastine is non-antibiotic drug which is inhibitor of renal dihydropeptidase. Renal dihydropeptidase. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. इसके ऊपर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि assertion and reason. Assertion है imipenem is combined with the silastine in the treatment of bacterial infection. And reason R देंगे. Silastine is a dihydropeptidase inhibitor. Silastine is a renal dihydropeptidase inhibitor. और आपको ऑप्शन में देंगे क्या? ऑप्शन ए assertion is true, reason is true, and R is the correct reason for A. ऑप्शन बी में देंगे assertion is true, reason is true, but R is not a correct reason for A. ऑप्शन सी में देंगे A is true, A is wrong, R is true. Likewise, they will confuse you. But अगर आपको concept clear है, आपको reason पता है, तो assertion reason वाले क्वेश्चन कुछ भी नहीं है. हाँ, वो अलग बात है कि बाकी जो क्लास वाले मतलब पता चला कि ये जान लेते हैं assertion reason. अरे कुछ नहीं है. Nothing is there. If you know the concept, you can solve any questions. Adverse drug reaction है उसको देखो. As like other beta-lactam antibiotics, वो वही है adverse effect है. Nausea, vomiting, diarrhea, allergic reaction, transient elevation in the enzymes of liver. मतलब liver में जो enzymes है मेटाबोलाइज करने वाले उसको elevation. Pseudomembranous colitis. इसके ऊपर क्वेश्चन है. Pseudomembranous colitis is the adverse effect. imipenem. उसके बाद में एक नया ड्रग आया है मेरोपेनम. नया ड्रग है उसका ही डेरिवेटिव है मेरोपेनम. imipenem meropenem, right? Similar action है, similar adverse effect है. Broad spectrum meropenem is also broad spectrum. Therapeutic uses क्या है इसके? It is highly effective against the gram-positive and gram-negative aerobic bacteria, anaerobic microorganisms. It is also useful in the its usefulness is restricted for the treatment of mixed bacterial infection and resistant to gram-negative infection. मतलब ये meropenem, imipenem जो है वो higher antibiotics है. They are the higher antibiotics and their use is restricted. अगर बहुत ज़्यादा infection है gram-negative, gram-positive का mixed infection है ना, बाकी ड्रग्स का कोई यूज नहीं हो रहा है इसके ऊपर, तभी जाके ये यूज करना है. तो इसको ही यूज करेंगे पहले. अगर इनको रेजिस्टेंस हुआ है तो फिर ड्रग ही नहीं. They are used in their usefulness is restricted for the mixed infection which are resistant gram-negative infection. They should not be used in the meningitis. Meningitis में इसको यूज नहीं. Meropenem, okay, meropenem drug is okay.
यस, मेरोपेनम जो है इट हैज एडवांटेजेस ओवर द इमीपेनम. तो इमीपेनम जो है ना उसको क्या है, इमीपेनम इज हाइड्रोलाइज्ड बाय renal dehydrogenase. Imipenem is hydrolyzed by renal dehydrogenase. That's why that is combined with the silalastine. But now in this case, अभी जो मेरोपेनम होता है, मेरोपेनम is not susceptible. It is not susceptible for the renal depeptidase. मतलब क्या, renal है ना, depeptidase एंजाइम जो है तो मेरोपेनम को ब्रेक डाउन नहीं करेगा, मेरोपेनम को हाइड्रोलाइज नहीं करेगा. That's why meropenem is more used than imipenem. नेक्स्ट आया एक ertapenem. Ertapenem, that is a broad spectrum and it is given once a daily OD IV. Okay, carbapenem is also there. Carbapenem, imipenem, meropenem, ertapenem. Okay, meropenem is not utilized by renal diabetes enzyme. It is reserved drug for treatment of serious nosocomial infection like septicemia, severe neutropenia, intra-abdominal and pelvic infection. Rifamycin का है, rifamycin का derivative है rifampicin, the derivative of rifamycin which is used in the tuberculosis. It is discussed in the tuberculosis. This is the end of your penicillins and cephalosporins. Okay, tomorrow I will take a 5 or 10 minutes